आई होप हेल्यूसिनेशन तक क्लियर है आपको। The second feature is the delusion. Delusion is a false belief which are maintained despite the objective evidences and the logical arguments against them. So these are the basically false beliefs which are maintained despite the objective evidences and logical arguments against them. There are many types of delusion, but you have to remember only two: grandeur delusions and persecutory delusion. Grandeur delusions mean there are ideas of or sense of grandiosity, बड़ा बनने की सेंस होती है। जैसे मैंने मिसाल अक्सर दिया था कि एक प्रोफेसर हमारे सोचते हैं कि भाई उससे बेहतर मेडिसिन तो यहाँ किसी को आती ही नहीं है। मेडिसिन के वो बाबा कायदे आज़म है, यहीं पर मेडिसिन शुरू है और यहाँ पर खत्म है। तो ये ग्रैंडियर आइडियाज उनके जहन में होते हैं और ये आप पहले उनके सामने कोई और अच्छा प्रोफेसर लाकर दिखा दें जिसने बहुत अच्छी प्रैक्टिस करी हो, जिसे मेडिसिन की उनसे ज्यादा समझ हो, लेकिन वो बात अगर न माने तो ये आपकी ग्रैंडियोसिटी में जाती है और ग्रैंडियर डिल्यूजन्स है। परसिक्यूटरी डिल्यूजन का मिसाल ये है कि अगर आप यहाँ बैठे हैं और बाहर आपके दोस्त आपस में बातें कर रहे हैं और आपको ये जहन में आता है कि वो मेरे खिलाफ कोई साजिश कर रहे होंगे या मेरी ही कोई बात कर रहे होंगे, तो जब वो आके अपनी वो रिकॉर्डिंग भी आपको दिखा दें, फिर भी आप कहें नहीं ये रिकॉर्डिंग तो है लेकिन ऑडियो आप लोगों ने चेंज किया है, दैट मीन्स एविडेंस भी था लेकिन यकीन नहीं किया गया। तो ये परसिक्यूटरी डिल्यूजन है, इट्स अ सेंस ऑफ परसिक्यूशन। डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच, डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच से हमारा क्या मुराद है कि जो बोलने की उनकी ताकत है वो एक साथ नहीं होगी, वो टूटे हुए अल्फाजों में बात करने की कोशिश करेगा। ग्रॉसली डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर होगा, जैसे कमरे में दाखिल हुआ तो इधर उधर देख रहा है, ठीक है। और डिसऑर्गेनाइज्ड मोटर बिहेवियर से मुराद है कि अजीब अजीब हरकतें करना, हाथ हिलाना, पाँव हिलाना, जबान बाहर निकालना और अंदर करना, आंखों को खोलना और बंद करना बार बार। तो अगर ये सारे सिम्टम मौजूद हैं, इन सबको हम कहते हैं पॉजिटिव सिम्टम। हेल्यूसिनेशन, डिल्यूजन, डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच, ग्रॉसली डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर एंड डिसऑर्गेनाइज्ड मोटर बिहेवियर। नेगेटिव सिम्टम, affective flattening, that means a flat, blunted and labile mood with inappropriate emotional response। यानी मूड एक जैसा रहेगा, खुशी होगी तो भी ऐसा ही होगा, गम होगा तो भी ऐसा होगा, यानी कि ना खुशी में वो खुश होंगे ना वो गम में रोएंगे, उनका मूड बिल्कुल फ्लैट होगा, ऐसा मूड होगा जिससे कोई रिस्पॉन्स नहीं है। एवोल्यूशन मीन्स लेक ऑफ मोटिवेशन, उनके अंदर कुछ करने की कोई मोटिवेशन नहीं होगी, उनका दिल नहीं चाहेगा कि भाई ये काम मैं करूं या मैं कर सकता हूं। एलोगिया, द पॉवर्टी ऑफ स्पीच, बात बहुत कम करेंगे, बहुत ज्यादा जब उसे जोर लगाया जाएगा तो कुछ एक दो अल्फाज वो बोलेंगे। सोशल विथड्रॉल, यानी कि वो अपने दोस्तों के साथ, अपने घर वालों के साथ, अपनी कम्युनिटी वालों के साथ बैठना पसंद नहीं करेंगे, अक्सर ये लोग अलग और अकेले रहना पसंद करते हैं। कॉग्निटिव सिम्टम्स होंगे जिसमें इम्पेयर्ड अटेंशन, इम्पेयर्ड मेमोरी होगी, इम्पेयर्ड एबिलिटी टू ऑर्गेनाइज, अटेंशन नहीं दे रहे होंगे ये किसी चीज पे, मेमोरी इनकी बहुत ज्यादा इम्पेयर्ड रहेगी, याददाश्त नहीं होगी और खुद को ऑर्गेनाइज नहीं रख पाएंगे कभी भी। अदर सिम्टम में स्लीप डिस्टर्बेंसेस हैं, यानी कि नींद सही नहीं आ रही, डिप्रेस्ड और अनस्टेबल मूड है, मूड सही नहीं है, कभी डिप्रेस्ड है, कभी थोड़ा हैप्पी हो जाते हैं, कभी इमोशनल रिस्पॉन्स कुछ भी नहीं आता,
और ये सब्सटेंस अब्यूज करना शुरू कर देते हैं, ड्रग्स, अल्कोहल लेना शुरू करते हैं. So there is no difference between the acute schizophrenia and a world at war. कहने का मतलब ये है कि जब वो शिजोफ्रेनिया का आपका मरीज है, वो इस वक्त ऐसी कंडीशन में है, उसका दिमाग ऐसी कंडीशन से गुजर रहा है जैसा एक दुनिया में जंग चल रही होती है. वो जंग उस वक्त उसके दिमाग में, उसके ख्यालातों के बीच में चल रही होती है. Now there are different types of schizophrenia. The first one is a paranoid, catatonic, disorganized, undifferentiated dual. सबसे पहला आता है पैरानॉइड शिजोफ्रेनिया. अब जो पैरानॉइड शिजोफ्रेनिया है उसमें हेल्यूसिनेशंस होंगी, डिल्यूजन्स होंगे, but there is no catatonic symptom such as grossly disorganized behavior नहीं होगा, motor catatonic behavior भी इनके साथ जो है इनका disorganized speech नहीं होगी. It usually affects 20 to 25 years of age. Catatonic schizophrenia, it is characterized by the prominent psychomotor symptoms होंगे. Psychomotor symptom से क्या मुराद है? इनकी बॉडी में रिजिडिटी होगी सबसे पहले. नंबर 2, म्यूटिज्म, ये हर वक्त चुप रहेंगे. थर्ड, स्टूपर. स्टूपर से मुराद है कि कोमा से पहले का स्टेज है. वो अगर किसी चीज को देखते रहेंगे तो वो चुपचाप उसको देखते रहेंगे बगैर पलक झपकाए, तो उसको हम कहते हैं स्टूपर होना. उसके अलावा इनके साथ हाइपर एक्साइटेबिलिटी हो सकती है. हाइपर फ्लेक्सिबिलिटी से मुराद है कि अपने हाथ और पांव को इस हद तक मोड़ सकते हैं कि आप इमेजिन ना करेंगे एक रबर बॉल हो, एक रबर की तरह वो अपने हाथ और पांव को मोड़ सकते हैं. स्टीरियोटाइप या पॉइंट हम गिनते हैं, इस तरीके की मूवमेंट इनकी फिंगर्स में चलती रहती है. इकोलेलिया and ecoparexia. Ecolelia means you repeat the interviewer's question. जो आप सवाल पूछेंगे वो सवाल रिपीट करेंगे. जैसे आप पूछेंगे आपका नाम क्या है, वो कहेंगे आपका नाम क्या है. Ecoparexia, repeat the interviewer's movement. जैसे अगर आप हाथ ऐसे करके बैठे तो वो आपकी मूवमेंट्स को कॉपी करेंगे. आप पाँव के ऊपर रखेंगे तो फिर से वो इस मूवमेंट को कॉपी करेंगे. ठीक है जी. Disorganized schizophrenia में it is characterized by the grossly disorganized behavior with disorganized catatonic behavior, disorganized speech, along with flattening of the affect, confusion, and a childlike behavior. Highly unkempt and difficult to complete the interview. And it is mostly seen in the teenage. उसके बाद आता है undifferentiated. तो जो undifferentiated schizophrenia है, this is not categorized into paranoid, catatonic or disorganized. इनमें mixed features होंगे जिसको हम ना disorganized में रख पा रहे हैं, ना catatonic में, ना paranoid में. तो ये undifferentiated में आ रहा है. Residual schizophrenia, negative symptom in the absence of the positive symptom. Residual schizophrenia वालों में क्या होंगे? सिर्फ negative symptom होंगे, positive symptom नहीं होंगे. Now diagnosis. For the diagnosis of schizophrenia, 2 or more of the following symptoms should be present, but for at least 6 months. कम से कम 6 महीने तक इनमें से सिम्टम्स मौजूद होने चाहिए, कम से कम 2.
तो हेल्यूसिनेशन जो मैं डिस्क्राइब कर चुका हूँ, डिल्यूजन्स, disorganized speech, disorganized gross behavior or disorganized motor behavior, and fifth one is the negative symptoms. तो इन 5 में से कोई भी 2 सिम्टम्स हो और कम से कम 6 महीने के लिए हो तो उसे हम शिज़ोफ्रेनिया लेबल करते हैं। Brain imaging will show the atrophic brain, especially around the temporal lobes, the dilated lateral ventricles, reduction in the cortical volume, especially around the basal ganglia. Thick होगा इनका corpus callosum, and PET scan will show the hypoactive frontal lobe and hyperactive basal ganglia. Treatment options for schizophrenia, you have to remember only the options. The medical treatment, psychological treatment, and social treatment. The medical treatment includes the antipsychotic drugs. The antipsychotic drugs are classified into 2 groups, typical and atypical. Typical are also known as the traditional antipsychotics and atypical antipsychotics. Starting with the typical or traditional antipsychotics, the names of the drugs are haloperidol, flufenazine, thiazide. These 3 are high potency, while in low potency there is chlorpromazine, perchlorperazine, and thioridazine. Mechanism of action will be the block the dopamine receptor, both D1 and D2. Their clinical use is in schizophrenia and other psychiatric disorders, but the side effects is extrapyramidal symptom. Okay? The extrapyramidal symptom it include the acute dystonia, akinesia, akathisia, and tardive dyskinesia. The acute dystonia will include the muscle spasm, muscle stiffness, and oculogyric crisis. Akinesia is the Parkinson's-like symptoms. Akathisia include restlessness, and tardive dyskinesias are stereotypical orofacial movements, which may be reversible. यहाँ भी आपकी बेट में किसी को टार्डिव डिस्काइनेजिया है, इसने एक क्रॉस लगाई है, तो बेटा ये आप अपने जो ना साइकियाट्रिस्ट से मिल लें। मेरे ख्याल से आपके जो डोज है ना वो एडिशनल हो रहे हैं, ओवरडोज हो रहे हैं। चलिए जी, डोपामिन एंटागोनिज्म भी होता है तो हाइपरप्रोलेक्टिनीमिया होगा, गैलेक्टोरिया एंड एमिनोरिया हो सकता है। एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट्स होंगे इसमें ड्राई आईज, ड्राई माउथ, यूरिनरी रिटेंशन एंड कॉन्स्टिपेशन, और न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम हो सकता है। अटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स में ड्रग्स हैं राइस्पेरिडोन, क्लोज़ापिन एंड ओलेंजेपिन। इनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में यह है कि they block the dopamine receptor. D1 is blocked more as compared to D2. Then serotonin 1 and 2, alpha, histamine 1 and muscarinic receptor. Clinical use again in schizophrenia and other psychiatric disorders. साइड इफेक्ट्स में अटिपिकल एंटीसाइकोटिक का में बेनिफिट ये है कि ये फ्योर एक्स्ट्रा पैरामेडल इफेक्ट करवाते हैं। ट्रेडिशनल या टिपिकल के मुकाबले में ये थोड़े से सेफ हैं। बाकी अगर अल्फा ब्लॉकर होगा तो हाइपोटेंशन, H1 ब्लॉक करेंगे तो सेडेशन,
साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में हमारे पास दो ऑप्शन आते हैं कि इनको रीअश्योर करें, सपोर्ट करें, गुड डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप हो, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी या सीबीटी होती है, और इंटेंसिव एंड एक्सप्लोरेटरी साइकोथेरेपी होगी जो कंट्राइंडिकेटेड रहेगी। इनके लिए सिर्फ और सिर्फ सीबीटी एसेंशियल है। सोशल ट्रीटमेंट में family counseling to provide an optimal stimulation of emotions and social stimulation to avoid the risk of relapse, sheltered employment हो इनके लिए, और follow up of poorly adhered treatment patient by the mental health teams. Thank you very much. And your questions are not welcome today. 68 students and attendance in your teacher. ठीक है